Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Jiten Singh, Faculty of Creative Aids, and today I will be discuss NID 2024 paper analysis. कि जो अभी 24 दिसंबर 2023 को जो हमारा NID एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसका ओवरऑल एनालिसिस क्या है, किस टाइप का पेपर था, पेपर पैटर्न क्या था, और पास्ट ईयर पेपर से भी हम कंपैरिजन करेंगे और इसका मे बी कट ऑफ भी क्या पॉसिबल हो सकता है। इन सारी चीजों पर आज का डिस्कशन होगा। सो एक बार हेलो एवरीवन, ओके। यस, पेपर इजी था, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल ना। सो ओवरऑल पेपर पैटर्न क्या था और आप लोगों ने कितना क्या अटेम्प्ट किया और आप लोगों को क्या डिफिकल्टीज हुई, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस। सो मैं बात कर रहा हूँ कि एनआईडी डीएटी प्रीलिम्स 2024। हेलो एवरीवन, हेलो बेटा, हेलो। ओके, कैसा था बेटा आप लोगों का एग्जाम? सो कमेंट करिए, तब तक मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एनआईडी डीएटी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर 2024 मेमोरी बेस्ड, बिकॉज क्योंकि ये पेपर हार्डली अपने को नहीं मिलता, ना ही इसका हार्ड कॉपी और ना ही सॉफ्ट कॉपी। सो इट इज टोटली मेमोरी बेस्ड, जो कि आप लोगों ने बताया उसी पर बेस्ड ये पेपर है ना। हम सो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। ओके, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया ना। तो हम बात करते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर पैटर्न देखते हैं तो 2016, 17 और 18 3 इयर्स का पेपर पैटर्न अलग था। ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ? 2016, 17 एंड 18। नाउ फिर मैं डिस्कस करता हूँ 2019, 20 एंड 21 का सेम था, एंड 22। तो ये 3 ईयर का पेपर पैटर्न बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। अगर मैं बात करूँ 2023 का, 19, 20 एंड 21, यहाँ आप देखोगे आपको एप्टीट्यूड और ना, यानी जीएटी एंड सीएटी में 30, 70 या 40, 60 तक वेटेज मिलता था आपको। ये सुनो, कब? मैं 2019, 20, 2021 एंड 22 एंड 23 तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनिशियली फिर था वो 30, 70, फिर आपका वो 60 एंड 40 डिस्कस हुआ। ये सुनो, फिर वो 60, 40 होता है और लास्ट टाइम में उन्होंने इंग्लिश यानी वर्बल एबिलिटी के कुछ प्रॉब्लम्स को ऐड किया। नाउ उससे पहले आप देखोगे 2016, 17 और 18 वहां पर भी वर्बल एबिलिटी नहीं था, और 2019, 20 एंड 21 यहाँ पर भी इतना वर्बल एबिलिटी नहीं था, लेकिन 2022 एंड 23 में उन्होंने वर्बल ऐड किया। नाउ 2024 में उन्होंने बिल्कुल भी वर्बल नहीं लिया। ओके, ठीक है। सो मैं बात कर रहा हूँ अभी ओवरऑल डिस्कशन। सो यहाँ आपने देखा होगा 2024 का जो मैं डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल आई होप ना सभी का एग्जाम बेटर गया होगा। तो यहाँ पर 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जीएटी एंड सीएटी। जीएटी यानी पार्ट 1, जिसका जो वेटेज था इस बार, सिनेरियो था 25 एंड 75, यानी जीएटी 25 एंड सीएटी 75। ओके, तो जीएटी में भी आपने देखा होगा जो आपका 25 था, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे बच्चों ने। 1 to 13 जो थे आपके 1 मार्क्स के, और बाकी जो प्रॉब्लम थे वो थे आपके 2 मार्क्स के, और इसका जो ओवरऑल वेटेज था वो 25 था। या सुनो, ओवरऑल वेटेज क्या था बेटा? ओके, इस पर भी हम आएंगे अभी लास्ट क्लास के जो सेशन है इसके एंड में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी क्या हो सकता है। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं 14 to 19 जो था वो, उसमें कितने थे आपके? 2 मार्क्स का था। ओके, फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, यानी इस एप्टीट्यूड जीएटी पार्ट को भी पहले हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते थे जनरली ना। फर्स्ट वन इज आपका जीके, एंड सेकंड वन इज आपका एप्टीट्यूड, एंड थर्ड वन इज आपका वर्बल एबिलिटीज। नाउ अभी ये क्या है, सिर्फ 2 पार्ट्स हो गए इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जीके जनरल नॉलेज, और सेकंड जो पार्ट होगा हमारा, जिसको हम बात करते हैं, वो है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आप देखोगे तो ओनली नॉन वर्बल ही आया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया है कि लोगो है ना, जनरली फेमस आर्किटेक्चर्स एंड इट्स आर्किटेक्ट, और ये लोगो डिजाइन, इन सबसे हाँ, इन सबसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं था। बट अगर मैं बात करूं, कुछ प्रॉब्लम थे। मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक, ये एक प्रॉब्लम था। फिर कुछ प्रॉब्लम थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट बेस्ड कुछ प्रॉब्लम थे। स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में जनरली आप लोगों ने ना, कल जो है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको पता होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, है ना, होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी।
ये प्रॉब्लम था, इसमें कुछ स्टेटमेंट थे और आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट सेकंड वन था आपका स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम था, जिसमें था आपका राइट्स एंड ड्यूटीज, उसको पूछा था, एक और जीके का ये प्रॉब्लम था। यस और नो? फिर था नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपका पेंटिंग्स थी, ठीक है, और इसमें जैसे मधुबनी बिहार है ना, डोकरा, ये सब पेंटिंग्स जो थी वो आपका जीके का एक और पार्ट था। मतलब मेनली अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल जीके जो आपका एनआईडी का जीके का पार्ट है, उसमें अलग से मेंशन है क्या कि पेंटिंग्स एंड फेमस पेंटिंग एंड पेंटर, तो उन्होंने ये भी पूछा था आपका फेमस पेंटिंग एंड पेंटर, वहां से प्रॉब्लम था। जनरली ये आपका नॉर्मल, अगर आपने 9th और 10th ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट इज होमोजेनिटी एंड व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक। यस नो? डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन, डेमोग्राफी जनरली हम बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ जो है उसका वो क्या हो जाएगा आपका, डेमोग्राफिक हो जाएगा ना। डेमोग्राफी क्या हो जाएगी, पूरा है ना, पॉपुलेशन हो जाएगी। ओके। फिर नेक्स्ट आपने देखा होगा होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटीज का मतलब क्या है कि भाई आज के टाइम पर है ना हर इंसान बोलता है कि भाई डाइवर्सिटीज बहुत है, लोग क्या है ना, हर एक फिर आपने इस डाइवर्सिटीज को अगर हम बात करें एनवायरमेंट में लेके जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा स्पीसीज डाइवर्सिटीज। यस सुनो? यस, मधुबनी पेंटिंग इज है ना बिहार, राइट, बिल्कुल राइट है ना, बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग बिहार राइट होगा। इसके बाद आपका था राइट एंड ड्यूटीज, ये चीजें थी है ना। फिर था आपका पेंटिंग से नेक्स्ट था हाउ मेनी बींग्स हैव ड्रैगन फ्लाई। सो आई होप एवरीवन, सभी ने ये चेक कर लिया होगा मे बी। ड्रैगन फ्लाई जो है उसमें कितने होंगे आपके, जनरली सभी को पता होता है कि कितना होगा, 2 पेयर्स होते हैं। यस सुनो? सो 2 पेयर्स मतलब 1 पेयर एंड 1 पेयर, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 विंग्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 4 विंग्स। तो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम था सोलर सिस्टम, हेलीकॉमेट्स। हेलीकॉमेट्स एक कॉमेट्स है जो 76 ईयर, आफ्टर 76 ईयर के बाद क्या होता है, वो दिखाई देता है। जनरली ये कॉमेट हो जाएगा है ना, हेलीकॉमेट। अर्थ ये क्या है, प्लैनेट हो जाएगा। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स है। सन क्या हो जाएगा आपका, स्टार। एंड अल्फा सेंचुरी ऑल्सो अ स्टार। यस और नो? आपने एक वेब सीरीज भी देखा होगा आई होप, है ना सभी ने, या नहीं देखा तो उनको पता होगा, लॉस्ट इन स्पेस, उसमें था ये अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी क्या है, नियरेस्ट स्टार की मैं बात करता हूँ तो अर्थ के जो नियरेस्ट जो स्टार है उनमें थर्ड नियरेस्ट स्टार हो जाता है आपका अल्फा सेंचुरी, एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये जो सेंचुरीज वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में था है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन, या दोनों में क्या कॉमन रिलेशन है, तो कॉमन रिलेशन किस किस में हो जाएगा, सन एंड अल्फा सेंचुरी। सन एंड अल्फा सेंचुरीज क्या है, बोथ आर स्टार। सो ये प्रॉब्लम्स थी आपकी। हाँ, अर्थ मून ये सोलर सिस्टम को बिलोंग करते थे, बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा, हेली कॉमेट भी सोलर सिस्टम को बिलोंग करता है, याद रखना। हेली कॉमेट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। याद रखना, सोलर सिस्टम छोटा नहीं है। सोलर सिस्टम का मतलब क्या, हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ है ना, यानी प्लैनेट्स एंड सन, और उसको ही हमने सोलर सिस्टम बोला। नहीं, इसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, क्यूपर बेल्ट्स, है ना, उसके बाहर के जितने सारे कॉमेट्स जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व होंगे वो भी आ जाएगा। तो हेली कॉमेट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि ये आफ्टर 76 ईयर के बाद दिखाई देता है हेली कॉमेट। ओके। नाउ नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रॉब्लम था आपका अर्थमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। सो टोटल 19 मार्क्स का जो था वो आपका अर्थमेटिक था, और 6 मार्क्स का जो था आपका जीके था। ओके, ठीक है। तो 19 मार्क्स जो था आपका अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब भी हमने पास्ट सेशन कंप्लीट किए हैं आपके 2019 20 एंड 22 का जो पेपर डिस्कशन किया है, मैंने उस टाइम पे भी मैंने बोला है कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटीज हमेशा क्या होगा, नॉन वर्बल। बिकॉज यहाँ देखो बेटा, किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी को भी नहीं पता कि एनआईडी क्या क्वेश्चन पूछता है। यस नो? राइट। हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस कर सकते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स थे और काफी लोग, आप लोग भी बताओगे कि हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे वही सेम कॉन्सेप्ट वहां पर थे। जनरली मैंने बोला था कि भाई फिगर मैट्रिक्स आपका, आप मेरा पार्ट ए वीडियो देखिए जो मैंने डिस्कस किया था। पार्ट ए वीडियो में मैंने वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस की है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
जनरली वहां प्रॉब्लम था आपका फिगर मैट्रिक्स था, सीरीज था, इमेज एनालिसिस था, और ये एक ट्राइंगल वाला प्रॉब्लम था। यस और नो? यस बेटा, एमडेस का भी हम डिस्कस करेंगे, ओके ना? तो यहाँ पर चीजें एमडेस का अलग से सेशन करेंगे, वो देखेंगे हम, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, ओके? सो फिगर मैट्रिक्स, सीरीज, इमेज एनालिसिस और ये प्रॉब्लम्स, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सब आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? ये एक प्रॉब्लम था आपका जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया था कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो जनरली सबको पता है ये वाला जो शेप है, आप देखिए बेटा, ये शेप, जनरली अगर हम बात करते हैं, यस और नो, सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स होंगे यहाँ पे? ठीक। सो यहाँ पर आप देखोगे हाउ मेनी ट्राइंगल्स, 1, 2 एंड 3, यस और नो? सो कितना हो जाएगा? सो ये 3, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यस और नो? आप देख लीजिए बेटा क्या होगा राइट आंसर। मैंने आपके सामने यहाँ इस प्रॉब्लम को ना, आपको करना क्या है, ये फिगर दिया उसने, यस और नो? इसके बाद कितने बचते हैं? तो कितना हो जाएगा बेटा? अभी एनआईडी आंसर किया जाएगा, उसमें रिजल्ट पता चल जाएगा ना, बिकॉज ये फिगर काउंटिंग प्रॉब्लम नहीं था। दिस इज नॉट फिगर काउंटिंग प्रॉब्लम। उसने क्या है, आपको एक ट्राइंगल्स गिवन था, ये गिवन ट्राइंगल्स है प्लस, तो आप देखोगे ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला एक, ये ट्राइंगल हो गया। सो हाउ मैनी, कितना, 1, 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके? तो मैं ओवरऑल पेपर की बात करता हूँ। द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम 2024 वाज इजी, है ना? इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं, यस और नो? ओवरऑल पेपर अगर डिस्कशन में बात करूं, द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ एनआईडी 2024 एंट्रेंस एग्जाम वाज इजी टू मॉडरेट, ओके? और द एनआईडी क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो 2024 कुछ बच्चों का जो मोस्टली मैंने रिव्यू किया है बहुत सारे स्टूडेंट से, तो उनका यही कहना था कि पेपर जो था क्या था, लेंदी था। यस और नो? पेपर वाज लेंदी बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एप्टीट्यूड पार्ट काफी कम था और उनको ड्राइंग पार्ट को सॉल्व करना था, तो ड्राइंग पार्ट्स में ड्रॉ करने में उनको काफी टाइम लगा। कुछ लोगों ने पेपर मिस कर दिया, ठीक है? सो पेपर आप देखोगे तो इजी टू मॉडरेट था आपका। अगर पैरामीटर्स में चेक करूं, एनालिसिस बेस्ड, ओवरऑल डिफिकल्टीज लेवल ऑफ द पेपर आप देखोगे इजी टू मॉडरेट था। पार्ट ए एमसीक्यू सेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपको DAT, सो ये था आपका इजी। बट पार्ट बी ड्राइंग सेक्शन वो था मॉडरेट। बट आप लोगों में कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये पेपर है ना बहुत टफ था, क्योंकि ना उसमें प्रॉब्लम ये था कि बेटा आपने प्रैक्टिसेस नहीं किया, आपको गाइड करने वाले लोग अच्छे नहीं थे, इसीलिए आपको पार्ट बी में ना कुछ बच्चों के कमेंट्स थे ऐसा, मैंने पढ़ा भी था, मैसेज भी था कि हमने है ना अभी ये जो एक प्रॉब्लम था उसमें कि भाई बी से कैंडल कैसे बनाया जाए। बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम ये वाली प्रॉब्लम्स पढ़ के गए थे बेटा, हमें ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना रहता है, ओके? सो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल पेपर आप जो देखेंगे तो वो इजी टू मॉडरेट था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। सो कट ऑफ में भी डाउन होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग पार्ट जब भी ज्यादा होता है तो कट ऑफ क्या होगा, लो होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड 100 आउट ऑफ 100 सिक्योरिटी रहती है और ड्राइंग में ये चीजें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी। सो नाउ अभी पार्ट 2 डिस्कशन के लिए मैं सर को ना हैंड ओवर करूंगा सारी चीजें। सर आपको वहां पर सॉल्यूशंस बताएंगे कि पार्ट बी में आपको राइट चूज क्या करना था। आप लोग अपने जो भी पेपर है आपने सॉल्व किया उसको कंपैरिजन करिए। सो नाउ मैं सर को ना हैंड ओवर करता हूँ। तो आप लोगों को पता है उनको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, नन देन है ना राजेंद्र भाटिया सर। सो मैं उनको ये सारी, ओके, ओवरऑल कट ऑफ भी हम डिस्कस कर लेंगे, ओके? उसके लिए हम अलग से एक वीडियो शेयर करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। सो अब मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ, ओके बेटा?
So, good afternoon everyone. कैसे हैं आप लोग? बहुत बड़ा काम करके आए, NID फेस करा। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलूंगा। थोड़ा बहुत मैं जितेंद्र सर से कंट्रोवर्सी भी रखूंगा। मेरे मेरे हिसाब से ड्राइंग सेक्शन बहुत इजी था, मॉडरेट नहीं इजी, और कट ऑफ ऊपर होएगा पिछले साल से। अच्छा देख लीजिएगा, अपन बात करते हैं कट ऑफ ऊपर जाने की। बड़ी बात क्या है, ड्राइंग सेक्शन ज्यादा नंबर का था। 25 नंबर का एप्टीट्यूड, उसमें इंग्लिश भी, जीके भी, जो डालने थे डाल दिए, पर 75 मार्क्स का ड्राइंग था। बिग थिंग, इजंट इट? तो हम लोग अब थोड़ा सा एनालिसिस करें, क्या क्वेश्चन थे, कैसे सॉल्व करने चाहिए थे। देखो, जो मैं ड्राइंग्स बताने जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप वही बना के आए या वैसा ही बनाना है। सबसे बड़ी बात NID में, हालांकि हम 24 बोल रहे हैं और 23 में एग्जाम खत्म हो गया है, प्रीलिम्स, but 24 is the admission year, that is why it's called as NID 2024. इसके बारे में अब अपन चर्चा करते हैं कि पेपर में क्या करना चाहिए था। पहली बात, पेपर कैसा आया और क्या करना चाहिए था, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एंड लेट अस सी फ्रेंड्स दैट दिस पेपर, I will give you the probabilities, and I got a little bigger responsibility to discuss with you because आज हम UG का पेपर डिस्कस करेंगे और PG के डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर्स भी मैं फॉलोइंग डेज में अलग से एनालाइज करूंगा। सो यू कैन जॉइन मी फॉर दैट एज वेल। एंड इवन जरूरी नहीं है कि अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो PG नहीं देख सकते, उनको भी देख के समझना चाहिए कि level of the question in undergraduate and postgraduate is similar। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अंडरग्रेजुएट के लिए इजी है, तो वो जो उम्र का डिफरेंस है या आपका एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में डिटेलिंग का। तो लेट अस गो गेट ऑन। पहले तो अपन समझे कि NID प्रीलिम एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर BDES 24 ये क्या है। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स और उसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23। नाउ 23 मतलब 19 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है जिनके मार्किंग 25 है हियर, और सेक्शन बी सिर्फ 4 क्वेश्चन, बोलने को 4 क्वेश्चन है, उसके AB फिर ABC, ऐसे डिटेलिंग है उसके अंदर। तो बढ़ जाते हैं वो एटलीस्ट 7 से 8 अलग अलग स्केचेस, और विद इन वन पोर्शन मेरे हिसाब से देयर कुड बी अ फ्रंट व्यू और साइड व्यू काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। तो हम देखते हैं अपन कैसे क्या क्वेश्चंस थे, एंड वी विल सी टू इट दैट दीज आर these were easy, at least to my students. They have been giving me a mixed feedback, more towards an easy, and that's where I suspect कि जैसे ही easy questions होते हैं और टाइम में कर लिया जाता है तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। This has been a trend in NID. What I'm really pleased this year that even there is a little additional weightage to the drawing. तो ड्राइंग कैसे होने चाहिए, कुछ इसको देख के, फॉलोइंग स्लाइड्स को देख के आपको समझ आएगा कि ड्राइंग कैसे होने चाहिए। फिगर 1 एंड 2 वेर गिवन। नाउ इस फिगर में क्या था, एक तो फोल्ड दिखाया था, जिगजैग फोल्ड था पेपर का। दूसरा, उसके ऊपर में आपको कैसा कैंची से, सिजर से कट करना है। या डायरेक्टली मैंने आंसर तो ला के दिखा दिया,
सही है, मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात, अगर इस पेपर का फोल्ड ऐसा है, कैन यू सी दैट? व्हाट विल हैपन? दिस शुड हैव बीन डॉटेड लाइन, हमसे गलती से वो थिक लाइन डल गया है। तो एक सेक्शन उन्होंने दिया है, आपको ऐसा कट करना है। बट हियर यू कैन ऑब्जर्व, एंड ऑफ कोर्स जब आपको जो प्लेन पेपर दिया था उसमें सिर्फ आपको एक सेक्शन बना लेना था, उसके मिरर इमेज दूसरे पे, उसकी मिरर तीसरे पे, चौथे पे। ठीक है, एक्चुअली वो कौन सा पहला बनाएंगे? लेट अस कॉल दिस एज फर्स्ट। ओके, this section should be created first and then cut उसका डाला जो उसमें दिया हुआ था, and thereafter you have to imagine the mirror image and repeating the image, the mirror image of that. That would land you up with such a drawing. तो अगर आपको इसमें के कट की प्रैक्टिस थी, ज्यादा लोग प्रैक्टिस क्या करके जाते हैं, वो 4 फोल्ड करे या 8 फोल्ड करे और उसके जो कट्स निकले उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें मिरर इमेज के अलावा वाटर इमेज, वाटर रिफ्लेक्शन, वो भी बनाना रहता है। इसमें सिंपल था, इसमें सिर्फ मिरर इमेज डालनी थी और आपका आंसर रेडी हो जाता था। क्वेश्चंस ध्यान से समझना। पोर्टेबल वाटर कैरिंग प्रोडक्ट इन ए हिली एरिया, माउंटेनस एरिया। ओके, तो उसको कैसे करना है, ये मेरा आइडिया है। पहले मैंने यहां पे अलग से लिखा नहीं है, लेकिन सबसे पहले बिफोर गिविंग एनी स्केच, डू a brainstorming here. Right? Write down what you want to achieve. Secondly, say if a problem like ऊपर तक ले जा रहे हैं, एक बड़ा कैन रख लिया पीठ पे, ठीक है, उसको कितना ही हल्का बना लो मटेरियल के हिसाब से, वो कैन तो 20 लीटर पानी लेके चल रहा है, तो पानी का वजन तो रहेगा ही। अगर सिर पे से बांधा है आपने, तो पूरे चांसेस हैं आपके पीछे गिरने के, आपके और पानी के कंटेनर के टूटने के। So write down in your brainstorming, one heavy container cross, divided into 4 5-liter container, 2 कंधे पे 2 हाथ में, भाई दोनों हाथ फ्री भी तो रख सकते हो। So motivation can come from a स्कूल बैग, उसमें भी आप 20 लीटर ले जा सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करा और उनके टेट्रा पैक वाटर कंटेनर, बॉम्बो मटेरियल पाउचेस बनाए। Now if you have read about sustainable material, of course I haven't written the quality of the bamboo material, but you could write that as well. So sustainable material are like, coming from nature. They're quite lightweight. So you can write down about that, fill this up as much as you can before you go in and sketch it out. Then I have tried taking a cloth hanger, a heavy one, but on that you can, I mean the idea has come from a panwala shop, a general store shop.
they are hanging pouches. Why not to have uh, a very safe, light-weighted bamboo material? The idea was to divide the weight. Divide the weight in 20 parts and maybe 4 rows of 5 each pouches. I mean, 5 pouches, each row, 4 rows. You can do it the other way around also. One coming onto your rib, one coming on your spine and rest of them on the backside of the ribs, 2 each. So you can have 5 rows of 4 1-liter pouches attached to each other. Of course, you can have a little perforation if you want. So that kind of a product idea will be even better. So friends, I think this one idea. Then of course there are stripes for the shoulder bag. Now I, in the final go, will like to do what? I will like to write down everything. 1-liter pouch made up of bamboo material. Into bracket, of course, you can write down a very sustainable kind of a product. So with you are aiming 2 birds with 1 stone. Sustainable material, weight divided, shoulder support, you got both the hands free. And remember, when you are climbing, weight division and keeping your limbs, both the legs and the hands, free will give you an access towards climbing also. You can have a support stick in the other hand. So such kind of, intensive thinking and applying it immediately. There is one more idea that people have been teaching. They say that leave aside your first, second, third ideas and implement the fourth one. I am of a little different opinion. Leave aside if the idea you think is going to be a common one, and do apply the idea, may it be second idea or third idea or even first idea. If you think that your idea is a unique one. When I was thinking about this, maybe I just thought it was my second idea, but then I thought that this is a brilliant idea and I can discuss a lot about it. So I will like to write down all my brainstorming here. Lightweight, divided weight, before that, I would also like to mention problems. Heavy, large quantity. You are carrying big cans. It can break your collarbone in case of a jerk. So, more detail you understand it, more biological application of it, better it is for your understanding the question and answering the questions. We go on to the next question. I will always have a good discussion on so there is candidate saying
She has written a lot about her product. Sharp edges can lead to damage, injury cylinder, etc. And so don't think that the bamboo material pouch is any which ways sharp edges. It is very soft. You Google it out and you will find it is as good as your plastic material, but plastic is not a sustainable one. This is a sustainable um, and recyclable product, the bamboo material pouches. We call them as Tetra Pak because there are four plastic involved in a Tetra Pak. So we call them as Tetra Pak. Here, the bamboo material pouch is a sustainable, a recyclable material. So you gain what points in the idea of dividing the weight, keeping the hands free. You also gain in your knowledge about the product that you're using. Now, and friends, let me tell you, I've been into design teaching for last 27 years, and any good idea coming up, I don't try to repeat it, but yes, I will always like to appreciate the um, the heading of it: sustainable, reusable, and a new idea. Now, weight division, as per the problem given to you, it is to carry out um, uh, on the place which is full of hillocks. So that kind of an idea, I will like to invite your comments on the idea also, how you like it, and was it similar that you tried solving. We have to show three crucial activities of the process. There were four processes given. You had to um, choose three of them and three process out of it. So there were potato to chips, bees to candle, mango to mango pickle, and then it was mentioned seashell or the beads to jewelry. Remember, you could do a sequential drawing with each of them, only three process each. I mean, three crucial process of the total process that you had to draw. Let's see what we have done here. Now, one of the difficult one, अरे बीज से कैंडल कैसे, मधुमक्खी से कैंडल कैसे? So first, whatever way you take out throw out the bees. This is a very old method, but very effective. You don't generally burn off the bees. You just put a little smoke to start with, make it a little dense smoke from a lot of distance. So the bees feel uncomfortable and they fly off. Okay. Second is you heat up the bees hive. You have to, of course, um, give all the beehive is the name for where they inhabit it, and then you have to melt the hive. Okay, and take it in the paper container, put a thread here, and take out the candles. That was the process. So there are three steps. One, that you remove all the bees, as many as possible, leave them alone and don't kill them. Second, melt the beehive. Of course, before that, one of the important method, or since we had to take only three, we have taken melting of it because our process is for making the candle. But before that, you could derive the material. What is that? Madhu, shahad. Okay.
तो वो उसको निकाल लो अपने इसमें कंटेनर में. Some could have preferred it giving here. Take out the okay. Take out the shahad out of it and then put it into the onto the fire for melting the wax. Then pour it down into paper molds. Paper molds. 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 Okay. And of course, you put a thread right up to the bottom. So the paper mold, when cooled down, it will turn into a candle. You can either cut open the paper mold or you can put a little oil, maybe edible oil will also do, or better it is to put the gear oil or the oil that you use to put into the motorcycle or car engines. A very little coat of that, and then you pour the wax, it will come out from the paper also. So you can use same paper mold many a times. Okay, that's about the knowledge that you can always pour down as your write-up, which NID people, they appreciate. More the knowledge, more the write-up, better it is for solving such questions. Then we come seashell to, or the beads to jewelry. Firstly, you have to pick up the seashells, then drill a hole here, making a hole in the shell. Then, of course, you can have the earrings or use a needle to tie up your things for a necklace. Easy going? Write about it, just not making holes and all that. Write about it, collecting seashells, maybe from seashore. One could be more enthusiastic, putting up a sketch instead of this could have been, a diver going inside and collecting deep sea shells. From inside the sea. So that also could be good idea to have the first one instead of this. Out of box, thinking not common. ये देखो कार्तिक नागर सिंह सर, मैंने तो स्कूबा डाइवर बना दिया ओशन के अंदर सीशल कलेक्ट करने के लिए. अच्छा है, बना दिया, बढ़िया है, गलती थोड़ी है. ज्यादा करके इजी तो ये है, पर यहाँ से रेयर सीशल बना लेके आएंगे हम और कॉस्टली होंगे ऑफ कोर्स, तो हमारी ज्वेलरी महंगी बिकेगी. या वी कैन फील प्राउड कि हमने तो एकदम बॉटम से निकाले, जो किनारे आते ही नहीं. Potato chips. Peeling and cutting the potato. Yes. Chips frying. One of the important aspect, I don't know if you have put it there, is the packaging. One could give a little interest here. Instead of frying, they could give next step as drying the chips. Some may know that chips, the potato chips are little boiled and then dried and then fried and then mixed with salt and pepper
they are packed. I thought packaging in potato chips is one of important ingredient of the process. So I thought of giving weightage to the packaging. There's one more candidate asking, do you think that they will cut marks for imaginative story? So far, your story is more practical. They'll give you good marks for it. Now, mango cutting for pickle. Now, that's the kacha wala mango, and you cut it with a sarota. English for sarota is sarota only. Okay. Then you take them into a specially designed container for pickles, mostly made up of porcelain ceramic or ceramic things, and put them pickle masala and oil, and of course the salt. That masala includes the salt, and keep it in sunlight. Grandma's way of doing it. And there is no better alternative so far. So they will judge your idea about, the proportions, the process, and the displaying the process, labeling it. I'm sure many of you have done very near to what has been displayed here. Next question, we had 3 parts. We have to draw a room for elderly people or child of age between 4 and 10 years. And layout was already given, and we only have to make the object. That means the layout of a corner of the room. Second part, draw one of the object from the scene in detail. That means the scene that you create here, you have to draw one of the object in detail. The third part, the object you made earlier, show one of the improved functionality of the product and write how it can be useful for individual. Now, friends, actually, this is one question. Actual meaning. Only thing you have to bring about the details and then improve onto the function. Those are already existing. Very interesting way of asking. There could be 2 answers, one for the child, the other for the elderly person. What I inquired from many of them was like most of the students liked doing things for a child between 4 and 10 years. Few of them have done a good thing about elderly person. Not that I am an elderly person, but little rarity in the answer makes it more commanding. More demanding into the better marking. So I would also like to take an elderly person into account and see the corner that was given. What I have done is draw an almirah which is transparent in the corner. Now, second thing, I also wanted to show the person using one of the product there. Firstly, look at the almirah, eye level. Okay. I think I have got a little brainstorming also done. No.
So it is just above the eye level. You can see the things right up to here. Transparent. Transparent almirah will give a very clear visibility to the old person. First aid box right in, or rather the medication box right in front. One thing that the old person frequently forget are the lenses, are his specs. So given a major area to keep the, now some of you may like to put a container of the new denture also here. That could also be an idea, putting it all along with the extra lens. One he might have been wearing, the other is here. Because, you know, आंख के सामने से आंख हटा दी, that means चश्मा हटा दिया, और चश्मा ढूंढने को बोला, so the person get frustrated. So there always is, almost a blind person can reach the corner of the cupboard and take out the extra lens. So do mark it as an extra specs. Right? One of the problem of old people is hydration. Keep a glass, steel glass, keep a peach, reasonably cold water for the summer, and okay for the winter. Some of you may like to bring this person here and maybe have his bed here and near the almirah only, down below, up here, or maybe on a big stand have the big container of water or dispenser of the water. So that difference you could bring in by yourself. A bed near to your utility thing would be very good. One umbrella, clothing very clearly seen by him, a cap here, woolen cloths. These are woolen. You might have seen some of old people. They keep on wearing their woolen cap throughout the year, particularly when they are going out for a walk in the morning or in the evening. They don't spare their head or keep the head open. So all those things you can mention here in the brainstorming as to what are the problem an old person faces, and this is what you have to draw in the conclusion. Remember, the walking stick is in the cupboard but is on the downside. Why? Because my brainstorming says that bending and lifting the thing is a problem. So almost at his height of the hand approaching down below, around knee will be the walker for this person. Now, one of the product that I have taken for detailing is the walker. Lot of innovation you can bring about, and that is what is inviting more. And even some of the improvement I have given right away onto the walker itself. One that padded layer grip for the hands. Then there is a grip for on legs of the walker, non-slippery, made up of rubber. Then there is a medicine dispenser here.
In a little hurry, I have forgotten keeping a water bottle here, but then I would like to mention it here. A water bottle. As I told you, one of the problem of an old person is to forget his rehydration. So keep reminding rehydration and medication in time. AI alarm sensor. Okay. AI will also guide if the person is dehydrated. I don't say is thirsty. He forget that he is thirsty. So he should be reminded of hydration frequently. Then the dispenser here of the medicine. The dispenser basically should be having 7 chambers, and each chamber should have 4 sections: morning, afternoon, evening, night, or before um, meals, or before a breakfast, after lunch, and after dinner. So at least 4 sections for each day. And yes, if you allow me to color it, I would color this in 7 colors. The Vibgyor, Monday to Sunday. So we have got that advantage. Person can recognize as to what day it is, and may keep a track with the color also. Of course, alarm, sensor alarm will keep on telling him. Then there should be, I'll show you in the advancement of it as to what should be done. I think I forgot mentioning the advancement, that is the C part of it, wherein I would like to have a button for the lid to come out. And this advancement is part C, the AI sensor. One button I have forgotten mentioning here. There could be a push button for opening the lid of each section. So there should be different colored button for each day to open it and close it. But that will not be with counter, because you need to refill it also at the end of the week. Right, friends? So that was about analyzing it. One important message to all of you. We are left out with NIFT and UCEED. We are also left out with JEE NATA examination. So, very interesting part. Creative Edge top rankers is going to conduct a boot camp starting from 8th of January till 14th of January. And look at the timing. Friends, we will be slogging, covering every aspect of the next coming examinations. So would you like to join us? Very nominal fees. You can just register and inquire about it. You will be surprised about everything. So friends, I look forward for seeing you. If you have liked my ideas of how to do the creativity, or how to do the creative part of the examination, and earlier what my colleague Jitin sir said about the aptitude, join us. Join us. We will see to it that you can achieve a great goal in a very crisp time, very fast, in a very short span of time. We can cover the whole. May you be, maybe you have taken my course, or you have um, taken somebody else's course for preparing for exams of NIFT, UCEED, CEED. Please come back to me and join to me for the boot camp.
Thank you very much for being with me and giving me a patient hearing. Let me select some of important questions if they need to be solved right now. There's one candidate saying no aptitude discussion. It was there. Let me also tell you, friends, I'm going to discuss the PG paper as well, post-graduation NID entrance test. So that I will also be discussing in coming days. I'm sure you have subscribed my channel, so you will get information about my such coverage as well. Right, friends? Thank you very much. I believe any other question you can keep on giving me a write-up. I may not be able to see all the question getting answered right away. So if you have subscribed my channel and if you are throwing your question, our team will scrutinize the question and they will be poured down to me for a specific answer. Thank you very much. Bye-bye for now.